So, hi everyone. Now we will start the new chapter, that is chapter number 4 of class 12 magnetism, moving charges and magnetism. In this previous lecture, in the chapter 3, we have discussed about the magnetic effects of electric current, that how a current carrying conductor produces magnetic field around it, behaves as a magnet. So, in this chapter, we will discuss about the magnetism, the properties of a magnet, what are the different types of magnets, what is magnetism, what are the different types of the magnetic materials, what are the related terms related to that magnetism. So these are the things which we discussed in the this chapter. So let us discuss what are the different topics. As I told you, properties of magnet, Coulomb's law of magnetic force, magnetic dipole, magnetic moment, torque on a dipole in magnetic field, work done or the potential energy of magnetic dipole in the magnetic field, current loop as a magnetic dipole, the Gauss law in magnetism, and some important terms like magnetic field intensity, intensity of magnetization, magnetic permeability, relative permeability, magnetic susceptibility, the relation between magnetic permeability and the susceptibility, classification of the magnetic materials, the hysteresis curve, the curve BH curve, and on the basis how we can choose a particular material for a particular application, like for electromagnets, which material we're going to use, for permanent magnets, which material we choose. So all these things we will discuss in this chapter. So let us start the chapter. First topic that we have is magnet and the properties of magnet. In the class 10th, you also studied about what is a magnet. So a magnet is a substance which attracts the magnetic materials. Right? If we talk about the types, the magnet may be a natural magnet and the artificial magnets. So natural magnet, lodestone or the magnetite, which are present naturally in the rocks on the earth crust. That is natural magnets. If we talk about the artificial magnets मतलब जो मैन मेड है, जो बनाई जाती हैं, एग्जाम्पल्स आर बार मैग्नेट्स, horseshoe magnets, cylindrical magnets, ball ended magnets. So these are different types of artificial magnets. आप एक आयरन पीस से भी मैग्नेट बना सकते हो, विच यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6. एक आयरन को हम किस तरीके से मैग्नेटाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, right? So that is magnet. Next, the properties. Properties also you start studying from class 6th, and you also studied much properties in class 10th in the 13th chapter. Okay, so let us do the properties. So magnet has two poles, north pole and the south pole. Okay, maximum force acts on, exerted by the poles, acts on the poles. पोल्स पे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स होती है इन कंपैरिजन टू द सेंटर. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी, मोनोपोल कांट एग्जिस्ट. मोनोपोल्स मतलब इफ यू कट अ बार मैग्नेट, अगर हम इस मैग्नेट को यहां से कट कर दें तो दो दो पोल्स बन जाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है. इफ वी कट दिस मैग्नेट अगेन टू मैग्नेटिक पोल्स बनते जाएंगे. अगर हम इसको यहां से कट कर दें, so it splits into the two magnets, north pole south pole, north pole south pole. इनको भी फर्दर अगर हम कट कर दें तो भी पोल्स बनते जाएंगे. तो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है. मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट. हमेशा दो ही पोल्स रहेंगे, चाहे आप कितना ही मैग्नेट को कट करते चले जाएं. फोर्थ, like poles, like or the similar poles, repel each other, and unlike or the opposite poles attract each other. ठीक है. attract each other. ठीक है. this magnet we have north, they repel if north and south are there.
देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप दोनों मैग्नेट्स लो, आप एक मैग्नेट लो, दूसरा एक करंट कैरिंग कोयल लो या करंट कैरिंग कंडक्टर लो। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट तो उसके भी पोल्स होंगे। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा पोल होगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स डायरेक्शन, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इट एक्ट्स लाइक द नॉर्थ पोल। ठीक है, और क्लॉकवाइज होगी कोयल के अंदर या करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। अगर नॉर्थ पोल है दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, अगर साउथ पोल है दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की। ठीक है, तो वहां पे हम करंट कैरिंग कोयल लेके या करंट कैरिंग कंडक्टर लेके अभी हम उसको एज अ मैग्नेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, so this is the fourth one property. Next, fifth property, the directive property, the most important property. Directive property. It is about the direction. If we freely suspend the bar magnet, if we freely suspend the bar magnet, it always points in the north-south direction. ठीक है, if suppose it is a bar magnet having north and the south pole. ठीक है, if we freely suspend it with the thread, अगर हम इसको किसी धागे से बांध के इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। रीजन क्या है? रीजन है अर्थ मैग्नेटिज्म। दिस इज सपोज अर्थ स्फेरिकल। ठीक है, proper sphere we can take from here. ठीक है, it is a spherical, तो spherical है अर्थ। सपोज these are the geographic north pole and geographic south pole। ठीक है, अर्थ की जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, बिकॉज अर्थ हैज मोल्टन आयरन इनसाइड इट। मोल्टन आयरन है, इसका मतलब you studied in class 11th and class 9th about the structure of atom. In the structure of atom there is a central core inside the center in which neutrons and protons are there and the electrons are revolving in the circular non-radiating orbits. So actually every matter is made up of atoms, that means charge is connected with it. ठीक है, particles हैं हर जगह अर्थ पे, because earth rotates around the earth and also revolving around the sun. अर्थ रोटेट कर रही है on its own axis और रिवॉल्व भी कर रही है, इसका मतलब अर्थ continuously is in motion. So charge is also in motion and we studied in magnetic effects of electric current in very starting lectures कि moving charge produces electric field as well as magnetic field. तो अर्थ के साथ साथ जो चार्ज है इसके ऊपर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारा मैटर है, मोल्टन आयरन भी मैटर है, एलिमेंट्स हैं, तो चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ के मोशन के साथ साथ वो चार्ज भी मूव करता है और अर्थ एक्ट्स एज अ ह्यूज कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया क्योंकि चार्ज मोशन में है। फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। दैट मीन्स moving charge on earth along with the motion of the earth produces magnetic field around it. तो अर्थ एक्ट्स और बिहेव्स एज अ ह्यूज मैग्नेट। एक्चुअली कोई अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट नहीं बरीड है, बट it acts as a magnet because it produces magnetic field around it due to the moving charge. moving charge की वजह से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलर रेडिएशंस को भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि सोलर रेडिएशंस आ रही होती हैं बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, ये उन सोलर रेडिएशंस से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सोलर मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ पे करेक्ट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है। तो दीज आर द थिंग्स, और मिनरल्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट में है। सो दीज आर 4 थिंग्स ड्यू टू विच लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स भी होंगे, हालांकि ये इमेजिनरी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है
बट जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं दीज आर इमेजिनरी. So suppose these are this. There is some angle tilt of magnetic poles in comparison to the geographic poles. थोड़ा सा tiltation है. So we consider यहाँ पे जो geographic north होता है, जो अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल है, उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कौन सा पोल होता है? साउथ पोल होता है. ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ SM से, यानी कि मैग्नेटिक साउथ पोल, और यहाँ पे होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. तो जैसे हम यहाँ पे बार मैग्नेट सस्पेंड कर रहे हैं, हम इस तरीके से बार मैग्नेट सस्पेंड कर रहे हैं, तो एक्चुअली अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, पोल्स भी हैं. तो जो नॉर्थ पोल है इट इज एक्चुअली अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट. अर्थ की कोई मैग्नेट नहीं है बट इमेजिनरी पोल्स हैं. तो वो जो साउथ पोल है वो यहाँ इस नॉर्थ पोल को, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है. बिकॉज रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रॉपर्टी कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल ऑफ दैट अर्थ डाइपोल या अर्थ मैग्नेट. ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक पोल, और साउथ को नॉर्थ वाला अट्रैक्ट करेगा. So this is north, it is attracted by south. तो ये किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा? It points in the direction of, बहुत कम टिल्ट होता है, बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं होता है. So it attracts, it actually points in the direction of north direction. ठीक है, तो ये जो नॉर्थ पोल है इट इज अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, और ये पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ. तो इजिली बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शंस. अगर हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता चलेगी तो हम ईस्ट और वेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन द नेविगेशन. ठीक है, नेविगेशन में जैसे शिप की नेविगेशन है या एरोप्लेन का है, तो वहां पे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास. तो मैग्नेटिक कंपास आपके फोन में भी होता है जो कंटिन्यूसली बताता रहता है व्हाट इज योर डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन में हो, नॉर्थ डायरेक्शन में हो, इतनी डिग्रीज हो, इतनी डिग्री नॉर्थ हो, इतनी डिग्री साउथ हो. सो दैट इज अ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. जो एंशिएंट टाइम्स में जो एम्परर्स होते थे दे यूज दिस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट. उनका जो व्हीकल होता था, जो तांगा वगैरह होता था, उसमें एक बार मैग्नेट लगा होता था, तो वो डायरेक्शन बताता रहता था कि किस डायरेक्शन में जाना है. नॉर्थ डायरेक्शन में है वो जहाँ पे उनको जाना है, या साउथ में है, तो इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन. सो इट इज अ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. और ये हमेशा क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं? ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये अर्थ का जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, दे अट्रैक्ट द बार मैग्नेट. राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ऑन हीटिंग क्या होता है? ऑन हीटिंग मैग्नेटिज्म लॉस्ट. ठीक है. एंड रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. इनके दो अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं हमें नहीं पता चलेगा, बट रिपेल कर रहे हैं, उस रिपल्शन को बहुत हम इजीली फील करते हैं. आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि व्हेन यू ब्रिंग द टू बार मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर, अट्रैक्शन हो रही है तो होके रह जाती है, पर रिपल्शन हो रही है तो कंटिन्यूसली हम उसको बहुत देर तक फील कर सकते हैं. तो रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म कि हाँ, दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. सो अंडरस्टूड. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, द बार मैग्नेट. नेक्स्ट we have Coulomb's law of magnetic force. We already studied about the Coulomb's law in in the electrostatics. There in the electrostatics it gives about the electrostatic force between the two charges. वो दो charges के बीच की force थी. That force is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. यहाँ पे मैग्नेटिज्म में जो Coulomb's law है थोड़ा बहुत सिमिलर है. वो चार्जेस के बीच की फोर्स को डिफाइन कर रहा था. यहाँ पे ये दो पोल्स के बीच की, तो पोल्स की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल्स की जो स्ट्रेंथ है, ये उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस वी हैव द बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज क्यू एम. आप एम से भी लिख सकते हो कि एम एन या एम एस
ये क्यू एम और क्यू एस से भी लिख सकते हो, और इन पोल्स के बीच में आर डिस्टेंस है, ठीक है। सो दिस फोर्स, दिस मैग्नेटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। दिस मैग्नेटिक फोर्स is directly proportional to the product of magnitude of strength of either magnetic poles and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them. What does it mean? जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द आइदर पोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स ये जो फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ क्यू एम या ठीक है, क्यू एम या क्यू एन लिख लो, या एम एन या एम एस लिख सकते हो, ठीक है, क्यू एन या क्यू एम लिख देते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या एन या एस लिखना है तो इट्स योर ऑन विश, या एम एन या एम एस भी लिख सकते हो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द आर स्क्वायर। व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, आप चाहे तो इनको स्ट्रेंथ को एम एन या एम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी गॉट अ कांस्टेंट के ओवर आर स्क्वायर। क्यू इज नॉट अ चार्ज, इट इज अ पोल स्ट्रेंथ, जो जिसको हम एम से भी लिख देते हैं, स्मॉल एम से भी, और क्यू एन या क्यू एस से भी लिख सकते हैं। इट इज अ पोल स्ट्रेंथ, you have to mention it is pole strength, pole strength. So here the value of K is, in electrostatics the value of K is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. Epsilon is the electrical permittivity of free space, and numerically K is equals to 9 into 10 raised to the power 9 in electrostatics. But in magnetism K is equals to mu naught over 4 pi, which is numerically equal to 10 raised to power minus 7. And what is mu naught? वहाँ पे epsilon naught था the permittivity of free space. Here we have mu naught, the magnetic permeability of free space. It shows a magnetic behavior. So it is magnetic permeability. So what is mu naught? It's magnetic permeability of free space, ठीक है। एंड दिस म्यू नॉट न्यूमेरिकली इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7, ठीक है। सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो सिमिलर है कूलम्ब्स फोर्स के। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। देयर आर ना वेरी many terms which are very much similar to the which you have already studied in the electrostatics, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल वहां पढ़ा था,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वहां पढ़ा था, टॉर्क की एक्सप्रेशन पढ़ी थी व्हेन यू पुट दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टर्म्स जो हैं क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी रिप्लेस हो गई हैं, इलेक्ट्रिक बाय मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय मैग्नेटिक डाइपोल, बट बहुत सारी चीजें जो मेथड है दैट इज सिमिलर। So what is magnetic dipole? In electric dipole, there is pair of equal and opposite charges separated by some small distance. There we represent dipole moment with P. So P is equals to Q into 2L. Here यहाँ पे क्या होगा? There are two magnetic poles which are separated by some small distance 2L. ठीक है, तो M into 2L यहाँ पे होगा अगर हम डाइपोल स्ट्रेंथ को या पोल स्ट्रेंथ को M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So what is magnetic dipole? It is a pair of opposite poles separated by small distance. ठीक है, so it is magnetic dipole. This is north pole, this is south pole, the length is 2L, ठीक है, and it is L and L. It is 2L. 2L लेना चाहो 2L लेना चाहो, it's your own wish. मिड पॉइंट से L and L हो जाएगा. This is magnetic dipole. What is magnetic dipole moment? Magnetic dipole moment. So what is magnetic dipole moment? It is a product of, it is defined as the product of strength of, the magnitude of strength of either poles, the magnitude of the strength of either poles and the separation between them and the distance between them, या फिर the separation between them, the separation between them, that is, it is represented by all these things you have to write. It is represented by M. ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से था, सो M इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L. ठीक है, M Q भी लिख सकते हो, इट्स योर ऑन विश कि आप M लिखना चाह रहे हो, स्मॉल m. ठीक है, तो स्मॉल m इंटू 2L. स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ, it is pole strength, and 2L is separation between the two magnetic poles, north to south के बीच में जो separation है, that is 2L. This is magnetic dipole moment. It is magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. So it is a vector quantity. It is a vector quantity. Its direction is from north to south pole. ठीक है. Next expression, we have a torque on a dipole in a magnetic field. Same expression we did as a torque when electric dipole is kept in uniform electric field. जहां पे expression क्या थी? Torque is equals to P cross E, यानी कि PE sin theta. Here we have the magnetic dipole, जहां पे एक north pole एक south pole है. It is kept in uniform magnetic field with theta angle between them. ठीक है, तो consider, you have to write firstly all these things. कि consider an electric dipole having dipole moment M
kept in uniform magnetic field, uniform magnetic field B with theta angle, with theta angle between dipole and the magnetic field. Then what happened? Now in this forces are applied. This is the force on the south pole, this is on the force of on the north pole. वी हैव स्टडीड कि कौन सी फोर्स लगती है उन्हें, अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं दैट मीन्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसमें फोर्स लग रही होती है ना. सो द फोर्स एक्ट द सेम. देन नाउ हियर द फोर्सेस एक्ट लाइक दिस, opposite directions, they are parallel to each other and having the same magnitude. उनकी strength same है, उनमें separation same है, तो the forces act in the same magnitude. So when the forces are parallel to each other, acting in opposite directions and having the same magnitude, then a couple generates, that generates a torque. तब generate होता है वहाँ पे. तो टॉर्क एक्ट्स विच प्रोड्यूस अ रोटेटिंग इफेक्ट, तो उस इफेक्ट की वजह से ये डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. सिमिलरली व्हेन वी डिस्कस द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे भी टॉर्क जनरेट हो रहा था जो उसको रोटेट कर रहा था डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में विद सम एंगल थीटा. तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल को क्या कर रहे, रोटेट करेगा. सो फोर्सेस आर पैरेलल, जो फोर्सेस एक्ट हो रही है, फोर्सेस ऑन द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आर पैरेलल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, equal in magnitude and acting in opposite direction, and acting in opposite direction. ठीक है. It generates a couple, it generates a couple and produces torque in the dipole, produces torque in the magnetic dipole. ठीक है, in the dipole which rotates the dipole in magnetic field, which rotates the dipole in the magnetic field. ठीक है. So what is torque? Torque is that physical quantity which produce a rotating effect, जो rotating effect produce करेगा, जो उस torque को rotate करेगा जब उस पे यहाँ से भी force लग रही है, यहाँ से भी force लग रही है, यानी कि force which act perpendicularly, इस तरीके से perpendicular force लग रही है इस पे, तो ये rotate करेगा about its axis. ये ऐसे भी rotate कर सकता है और ये ऐसे भी कर सकता है, depends on the कहाँ से force लग रही है, किस direction से force लग रही है. So torque is equals to force into perpendicular distance. The symbol of torque is tau. So torque is equals to force into the perpendicular distance. ठीक है. So torque we represent by the tau. Force mb. So in this is की मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, दोनों पोल्स का, तो एम बी फोर्स लगेगी और यहाँ पे भी एम बी, तो मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन अपोजिट होगी एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सो अगर हम ये ट्रायंगल लें, दिस ट्रायंगल जो भी है ये ट्रायंगल, सो इन दिस ट्रायंगल थीटा इज दिस इज 2l, सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस इज परपेंडिकुलर थीटा के सामने जो है, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, सो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज 2l. सो व्हाट इज द एंगल साइन थीटा? अगर हम उस ट्रायंगल में इफ वी फाइंड द साइन थीटा, ये ट्रायंगल है ना हमारे पास, दिस इज थीटा, दिस इज 2l, नेम दिस ट्रायंगल ABC, whatever you want, this is right angle triangle. तो in this triangle
ABC, find the sin theta. तो sin theta is equals to it's perpendicular over hypotenuse. Perpendicular we have is ये आर्म, क्योंकि इसी के अक्रॉस फोर्स लगेगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा. सो दिस इज BC. तो BC ओवर हाइपोटेनियस इज 12. तो ये जो परपेंडिकुलर हमारे पास आया, आप इसको PB लिख सकते हैं. इट्स योर ऑन विश इफ यू नेम इट BC. तो BC इज इक्वल्स टू 12 साइन थीटा. तो ये जो परपेंडिकुलर आया हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 12 साइन थीटा, जिसके पास फोर्स एक्ट होगी. तो फोर्स, व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली, देन द ऑब्जेक्ट रोटेट्स एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज टॉर्क. ये जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? टॉर्क है. तो फोर्स लग रही है mb. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास? इट्स 12 साइन थीटा. रीअरेंज इट. टॉर्क इज इक्वल्स टू mb 12 साइन थीटा m इंटू 12. अभी हमने बात की थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो टर्व इज इक्वल्स टू mb साइन थीटा. राइट ना? व्हाट इज m? m is equals to small m into 12. Pole strength into the separation. In the vector form, tau is equals to m cross b. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में इट इज साइन थीटा. तो m क्रॉस b. राइट? तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक डाइपोल placed in a magnetic field, it's m cross b, that is mb sin theta. If we talk about the special cases of it, our expression will be tau is equals to m cross b, that is tau is equals to mb sin theta. When magnetic dipole is kept parallel or anti-parallel in the magnetic field, that means theta is equals to 0 and 180 degree, 0 और 180 डिग्री. ठीक है, या तो 0 या 180 डिग्री हो. That means dipole kept parallel or anti-parallel to magnetic field. Anti-parallel to the uniform magnetic field, then expression is tau is equals to mb sin theta, and sin at 0 degree or sin at 180 degree is equals to 0 होता है. that means no torque act on it. फोर्स तो लग रही है बट टॉर्क नहीं है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहोगे तो 0 डिग्री नहीं होगा. मतलब 0 डिग्री पे या किसी भी एंगल पे 0 डिग्री तो एंगल होगा नहीं, कोई ना कोई दूसरा एंगल होगा नॉन यूनिफॉर्म के केस में. सो देयर टॉर्क एक्सर्ट्स, फोर्स तो लगेगी, टॉर्क भी एक्सर्ट करेगा वहां पे. बट अगर आप उसको अलाइन कर रहे हो, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको इस तरीके से पुट कर रहे हो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल होगा. सो नो टॉर्क एक्ट ऑन इट. टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, दिस इज मिनिमम टॉर्क. अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द मिनिमम टॉर्क, तो इसका मतलब 0 डिग्री की बात हो रही है, 180 डिग्री की बात हो रही है. नेगेटिव में 180 डिग्री की बात होगी, साइन 180 डिग्री. ठीक है, 0. और मैक्सिमम टॉर्क की बात हो रही हो, देन मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो टॉर्क इज इक्वल्स टू mb आ जाएगा. ठीक है, राइट? So this is the expression for tau. So we end today's lecture over here. Then more topics or we will discuss in the upcoming lectures. So we end today's lecture here. Thank you. कितने मिनट की